today, Manish Sisodia, to be taken to the court. Well, to talk more about this, the way the Aam Aadmi Party is protesting this arrest and the allegations and the political ramification, we're now joined by Mahesh Verma, leader of the BJP, and Akshay Marathe, spokesperson of the Aam Aadmi Party. And Akshay, first it's being raised by the BJP and Congress also pointing out why is the AAP protesting so much? Why are they making such a big show out of this? The BJP has even called it an event management, the manner in which Manish Sisodia went in for the questioning. If there are these very serious allegations against him pertaining to the liquor policy, and let the CBI do its work, and the courts will decide. Gargi, I think there is no doubt in the minds of a single Indian today that Mr. Manish Sisodia is an honest man. He's a decent man. He's a national hero who has transformed the Delhi government schools where more than 25 lakh children have benefited in the last 8 years. He is the man who people see with a ray of hope across the country. Parents today look at Mr. Manish Sisodia and think that yes, our government schools will also one day become as good as Delhi government schools. He is the man who has shown us that with honest governance, we can make our country's schools better. And the way in which he's being humiliated and harassed and persecuted by the Narendra Modi government, this is a black day in India's history. It is a moment of shame for India that a man who has given his everything to the country, he has given 8 years of his life to transform Delhi's education, is now being maligned and humiliated in this manner only and only because the Narendra Modi government cannot digest the growing popularity of Mr. Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Akshay. That is why the Aam Aadmi Party is angry. We are going to protest, and the entire country today is going to mark this day as a moment of protest against the BJP for throwing a man Akshay, who has given us hope. Before I get a response from Mr. jail. Verma, may I ask you what you have said? May I just ask you a subsequent question? Mr. Manish Sisodia, arguably or not, I mean, that is something that can be debated, has been one of the key principal faces as far as the Delhi education system is concerned, or the way it has been transformed. But the question is not on Manish Sisodia, the education minister of Delhi, but it is on the excise minister, Mr. Manish Sisodia. Does his good work in education whitewash if there is any wrongdoing? And that is something that the court has to decide. And number two, you are saying that Arvind Kejriwal is being taken as the biggest threat as far as Mr. Narendra Modi is concerned. There are 2 states and 4 bypolls going on right now in this country. Aam Aadmi Party is not even a player. So what benefit does the BJP get right now by putting Mr. Manish Sisodia in the prison? Ankit, let me answer your question in 2 parts. Number 1 is on the excise policy itself. The same excise policy that Delhi had implemented is currently ongoing in the state of Punjab, where the Aam Aadmi Party has been in power. Do you know that in the last 1 year, the revenues of Punjab government have gone up by 40% as a result of our liquor policy in Punjab? The same policy was being implemented in Delhi, and it was scuttled by the interference of the Lieutenant Governor, because of which we have had to face a situation in Delhi today where that liquor policy had to be withdrawn. Number 2. The question of corruption arises when you can show that there is any kind of kickbacks or any kind of bribery. For the last 1 year, the CBI has raided Mr. Sisodia. They have gone to his village and looked for any property. They have gone to his bank accounts, looked for any kind of evidence of money trail in his bank accounts, in his bank locker. Nothing has been found against him in the last 1 year. So on what basis can you tell me is Mr. Sisodia being charged with corruption when there is no evidence of any kind of bribery or any kind of kickback being given to him? So on what grounds is the BJP saying there has been corruption? Can anyone today answer this question? The CBI, the BJP, the CBI's lawyers, what is the evidence you have found against him after investigating for more than 1 year with 500 officers? These are important officers, I presume, of the Indian government who are wasting their time for a political vendetta case like this, and going after an honest man, going after a decent human being, just because he's politically opposed to you. Allegations, Akshay Marathe, against Mr. Sisodia. But Mahesh Verma, we'd like to get you in here. Your response to, what the Aam Aadmi Party is saying, calling this a vendetta, saying that this is a result of the fact that, the BJP is not making any headway in Delhi. The MCD elections were also lost by the BJP to the Aam Aadmi Party. And all this is, pertaining to that also. And that is why we're seeing this, concerted, what they're calling this vindictive politics against Mr. Sisodia.
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचार के एक नए डिफिनेशन जो है इस देश में अब गढ़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भगत सिंह और महात्मा गांधी तक को इन्वॉल्व किया जा रहा है। सवाल यह है कि ऐसे चेहरे जो भ्रष्टाचार के नित नए कारनामे किए जा रहे हैं, आज देखिए पंजाब में क्या हुआ। आम आदमी विधायक जो है अमित रतन गिरफ्तार हुआ। किसने गिरफ्तार किया, किस मामले में गिरफ्तार हुआ? तो आप लोग हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और एक चीज मैं आपको, आपके दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये वो शर्मनाक चेहरे हैं जो आज की डेट में देश के लिए एक धब्बे बन चुके हैं, एक कलंक बन चुके हैं। कैसे लोग हैं ये? मुझे ये बताइए कि यही मनीष सिसोदिया एक हफ्ता पहले सीबीआई को ये चिट्ठी लिखते हैं कि आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपके आगे आऊंगा, आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब एक हफ्ते का टाइम लेते हैं, उसके बाद ये सारी तैयारी करते हैं कन्फ्रंटेशन की, क्योंकि इन्हें मालूम है ये अपने घर से अपनी माता जी से आशीर्वाद लेके निकलते हैं कि माँ मैं तो जेल जा रहा हूं भगत सिंह की तरह। भगत सिंह ने कभी शराब घोटाले में कभी वो जेल गए हैं क्या? महात्मा गांधी क्या शराब के मामले में जेल गए हैं क्या? पर किस तरह का अपमान है इस देश? वर्मा जी, जैसे आम क्या आदमी मतलब पार्टी बनता है? मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दिए जा रही है, वैसे ही आप ये ट्रायल स्टेज पर ही आपने उनको मान लिया है कि दोषी हैं। अगर इतने बड़े ही कलंक नहीं, हम सिर्फ कैसे मान आरोप लें? लगने सर नहीं, सर नहीं। अगर इतने बड़े कलंक आरोप लगने से लोग हो रहे होते तो फिर तो बहुत बड़ा कलंक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बीएस येदियुरप्पा भी हो जाते, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी हो जाते। तो ये तो कोर्ट को तय करना है सर, कौन दोषी है, कौन सुवेंदु नहीं है। अधिकारी भी हो जाते। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। आप जो बात कह रहे हैं, हमने इस तरह का ड्रामा, इस तरह का प्रोपगंडा और इस तरह के सवाल नहीं पैदा किए भ्रष्टाचार के मामले में, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। कि आपने जो आपके चैनल पे कभी ये दिखाया गया कि अमित रतन गिरफ्तार हुआ है, एसीबी के गिरफ्त में है भ्रष्टाचार के मामले में? कहीं सुनाई पड़ा है आपको? क्या मतलब बनता है इस तरह के प्रोपगंडा को? क्या मतलब बनता है इस तरह के भ्रष्टाचार को कंसील करने का? आपको मुझे ये बताइए कि आप जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार है। 3,000 करोड़ रुपए का खजाने से खाली हो गया, 10,000 करोड़ की रिश्वत लिया गया, 4 कानूनी दिल्ली में बदल दिए गए, जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ ठेके खोले गए। इसके लिए अंकित जी आप जिम्मेवार हैं, इसके लिए आप जवाब देंगे? सर जवाब मनीष सिसोदिया जो लीडर है वो जवाब लेगी और बाद में कोर्ट तय करेंगे। बट अक्षय मराठी, यू आर हियरिंग दिस, द फैक्ट इज दैट देयर इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। व्हाई इज द आम आदमी पार्टी सो at this moment looks like that they are so edgy that they just want to paint a political picture? You've been on one hand saying that Manish Sisodia has done nothing wrong. If he has done nothing wrong, he will come out with, shining after this investigation. It will only bolster your claim. Why make this a confrontation and make it all political? Ankit, the proof of the pudding is in its eating. And in this case, the proof of corruption is in a conviction. And unfortunately for the Bharatiya Janata Party, not a single Aam Aadmi Party leader who they have accused of corruption has been convicted by the court of law. In fact, out of 150 cases filed against the Aam Aadmi Party by BJP, in 135 cases, the courts have acquitted our leaders and slapped the Delhi police and the other investigating authorities for actually fabricating cases against the Aam Aadmi Party. So the track record is speaking for itself. The Aam Aadmi Party is having to defend itself because just imagine, Ankit, if you had to go to jail for a fabricated case, how would you feel today? Will your friends not stand up for you? If your family has to suffer the humiliation of you being sent to jail on a false case, will you not fight against that? Is Aam Aadmi Party not supposed to raise an alarm, raise a voice against dictatorship in this country? All right, What well, let's is the take BJP that across saying to today? Mr. Verma. Mahesh Verma, the opposition is alleging that, again and again we're seeing opposition leaders having these ED, CBI cases against them being thrown into jail. We just saw it in Maharashtra as well. And that these agencies are being weaponized and politicized and being used against opposition leaders. And that is what we're seeing in Delhi. That's the claim. Whereas you have, as Ankit had mentioned, Hemanta Biswa Sarma, you have Suvendu Adhikari, Yediyurappa, also leaders who had cases. Hemanta Biswa Sarma and Suvendu Adhikari joined the BJP, and those cases just seem to have disappeared. So what would you say to that these cases are being brought against opposition leaders and they're being targeted and put into jail for months on end? पता नहीं, मतलब इस देश में मुझे तो जितना मुझे मालूम है कि एक एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद सीआरपीसी के तहत जो है सारी प्रोसीडिंग शुरू होती है। एक एफआईआर दर्ज होने के बाद जितनी भी कार्रवाई होती है वो कोर्ट मॉनिटर करता है। इस देश में
अब ये सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए हम और आप तय कर लें कि इस देश में जो है, जो एक अपोजिशन के लीडर है, जो जिनका कहीं इनसे कनेक्शन है, जिनका कहीं इनसे लेना देना है, वो जरूर इनके लिए कुछ बोलेंगे। जो भ्रष्टाचार को जो है किसी तरह से यहाँ प्रोटेक्शन देते रहे हैं, आज वही लोग इनके समर्थन में खड़े होंगे। जो भ्रष्टाचार के मामले में कहीं जेल में हैं, कहीं बेल पर हैं, वही इनके साथ खड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आज की डेट में कि मनीष सिसोदिया का जो आचरण है जिस तरह का, उससे देश में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो बहुत कम दिनों में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ये अपने घरों से निकले थे और भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान जो ये स्थापित करते जा रहे हैं, आप मुझे बताइए इनके कम से कम ये कह रहे हैं क्या कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई हमारा विधायक जो है अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुआ, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ? अरे पंजाब में तो आपके सरकार बनते ही आपके वित्त मंत्री के ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार को और उनको अपनी बर्खास्त। जवाब ले लीजिए। शर्म आनी चाहिए। ऐसे शर्मनाक चेहरे के साथ अगर आप बात करेंगे भ्रष्टाचार मिटाने की, तो आपके ऊपर कौन यकीन करेगा? और आपको समर्थन देने वाले लोग वही होंगे जो आपके साथ कहीं ना कहीं मिले होंगे। एक कहावत है ना, चोर चोर मौशेरे भाई। तो कुछ हद तक आप लोग आज की डेट में अपना चाल चेहरा चरित्र इस देश में इस तरह का निर्माण कर रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों के पीछे अगर 100 लोगों की हुजूम है तो इस देश में जो है महेश वर्मा जी उनका जवाब भी सुन लीजिए, उनका जवाब भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचार जो है एकदम खत्म करने की बात हो गई। अक्षय, गो अहेड। People he's naming, I want to clarify to your viewers, Ankit. He's naming a Punjab health minister who's in jail right now, and he's naming a AAP MLA in Punjab who's also in jail right now. Both these individuals were sent to jail by the Aam Aadmi Party government, not by any other party's government. We have a zero tolerance policy towards corruption, and that is why they are in jail. Nobody came to us and complained. Nobody made any press conferences. Oh, dekho, this MLA is. We caught him. We caught him and we sent our ACB and caught our own MLAs. That's the commitment we have to anti-corruption. Your party colleague Saurabh Bhardwaj right now is addressing the media on the plans of the Aam Aadmi Party's protest. So let's listen in. आज इन लोगों को पकड़ना है और हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री बीती रात मिलने गए मनीष सिसोदिया के परिजनों से, आप भी वहाँ पे थे, आप लोग भी गए बाद में। सीएम ने कहा कि एक तरह से इंटेंशनल कार्रवाई है, इंटेंशन के तहत की जा रही है और उनके अलावा बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले। देखिए, ये बात हम लोग बता ही रहे हैं, 10 महीने से सीबीआई जांच कर रही है। सारी की सारी फाइल्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ सीबीआई के कब्जे में है। क्या कोई एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सीबीआई ने आज तक पेश किया? एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी को बताया जा रहा है। 2 चार्जशीट सीबीआई फाइल कर चुकी है। क्यों नहीं मनीष जी के ऊपर अब तक चार्ज दिया गया? क्योंकि उनके खिलाफ अब तक सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। अब वो उनको गिरफ्तार करके कुछ सबूतों को बनाने की कोशिश करेंगे जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। आप पहले सबूत दिखाएंगे फिर किसी को गिरफ्तार करेंगे। यहाँ तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, पहले गिरफ्तारी की जा रही है, कह रहे अब हम सबूत ढूंढेंगे, इन्हीं से इनके खिलाफ जो है सबूत लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दूसरा मुद्दा है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो अमरिंदर सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल उठाया है और कहा कि मुख्यमंत्री जो भगवंत मान है उन्हें पंजाब की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। You know, Gargi, it's quite interesting how political parties play. In fact, every statement, as far as Mr. Saurabh Bhardwaj, who was speaking right now, he was saying that there hasn't been any proof that the CBI has, in fact, put to bolster their claim that Manish Sisodia has done anything wrong. All that has to be done in front of the court. But let's very quickly, because we've been talking about Manish Sisodia, who is Deputy Chief Minister of Delhi, number 2 as far as the Aam Aadmi Party is concerned, a close aide of Arvind Kejriwal. And how big a blow this is to the Aam Aadmi Party, with especially given that he was in charge of so many portfolios. So, Ankit, just take us through what it means now for AAP and what in just one line, it is a much bigger blow as far as the Aam Aadmi Party is concerned, Gargi, even when it compared it to the Health Minister Satyendra Jain, who has been languishing in the prison for the last 10 months. And he's still the Health Minister so many months later. Yes, Manish was in fact given the additional charge of Health, PWD and other ministries, but both of them stay in the cabinet. He's number 2 in the Aam Aadmi Party and Delhi government. While Arvind Kejriwal was able to focus on the national expansion, it was Manish Sisodia who was running the government. 18 out of the 32 departments
departments of the government of Delhi. Manish Sisodia runs 18 of those departments. More than half of those departments are being run by Manish Sisodia. So it is going to be a crippling impact on the Aam Aadmi Party's governance in the national capital. He has home, education, finance, PWD portfolios, and because Mr. Jain is inside, even the health ministry came under Manish Sisodia. He's the second Delhi minister who has been arrested after Satyendra Jain. And remember, there are two pillars to the Arvind Kejriwal model of governance. Health and education, both the faces of this model are right now under the scanner of the agencies. He runs the Delhi government as Arvind Kejriwal has been able to, he's focusing on the national expansion. We were hearing in the next few days, Arvind Kejriwal was going on a tour of the states which are going to polls in 2023 and for the party's expansion plans ahead of 2024. So all those will be hampered. His arrest will tie the chief minister to the national capital. Delhi, remember, has 7-member cabinet, including the chief minister. 2 of them are right now not available to work. It is going to be imperative on the chief minister to shoulder that work. Aam Aadmi Party and the Delhi government so closely. Do you see any, next rung leaders being elevated and, being brought in to take charge of some of those portfolios? It's a very important question and also it's something that is going to put the Aam Aadmi Party in a catch-22 situation. Mr. Arvind Kejriwal did not take away the portfolio or the cabinet rank of Satyendra Jain for the last 10 months. With Manish Sisodia going in, even if he wants to run the government and he does a reshuffle and puts them out of the cabinet, politically, that message is not going to go down well. And if he doesn't do that, who will he get to run these departments? And that is going to be a big problem as far as Mr. Kejriwal is concerned. Akshay, a lot of people at this moment, you would say that not only is this a big gap as far as the political plans and the governance of Delhi is concerned, but also it is going to hamper the work of the Delhi government, and it's a personal setback for Mr. Kejriwal as well. He's a close aide, a friend of Manish Sisodia. They go back to 1995. Absolutely, Ankit. And I think this is where the distinction needs to be drawn between what is politics and what is dirty politics. In politics, what happens is one party says, we are going to offer you X and that's why vote for us. Another party says, we will offer you something else and makes an appeal for votes. In our country, what's happening, Ankit, is we have seen a period of very dirty politics where one party, the Bharatiya Janata Party, is telling the other party, if you are going to work on education, health, power, water sectors, we will arrest your leaders and we will throw them in jail and not let good work happen. That is what the definition of dirty politics is, Ankit. And that's what the BJP has shown today. They want to scuttle the work of Delhi government. They want to scuttle the good work that Mr. Arvind Kejriwal and his government has been doing. And tell me, Ankit, is it Mr. Sisodia's personal loss or is it the loss of the children of Delhi? The 25 lakh children of Delhi who have benefited because of Mr. Sisodia's good work, they are the ones who are going to lose out to dirty politics of the Bharatiya Janata Party. It is the people of Delhi who have voted with an astounding mandate for Mr. Arvind Kejriwal's government with 62 out of 70 seats. They are being punished by the Bharatiya Janata Party because of their petty vendetta and petty politics. The BJP will have to answer for this kind of behavior in the days to come. The people of India are watching. They are angry by this behavior in a democracy. All right. So again, Ankit, what you were saying, the education minister, Mr. Sisodia being played up as the education minister. Yesterday, he referred to himself as, Chacha as well to the children of Delhi. That all being played up. But the issue at hand is the liquor policy. Mahesh Verma, your response to what Akshay Marathe is saying, this dirty politics. मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि एक ऐसा शर्मनाक चेहरा सामने आता है, या वो सत्येंद्र जैन का हो या मनीष सिसोदिया का हो, जिसको महिमा मंडित करने का काम लगातार ये लोग करते आ रहे हैं। आप देखिए केजरीवाल 22 जून 2022 को क्या कह रहे हैं अपने ट्विटर के जरिए कि सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने आरोपी नहीं है बनाया, भ्रष्ट कैसे कह सकते हैं। अब वही सत्येंद्र जैन जो है जेल में है और तमाम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सुप्रीम कोर्ट तक भी उनकी चीजों को सुनने से मना कर दिया कि नहीं भाई, किसी तरह की जो चीज जो कन्विक्शन होगा और जिस तरह का उन्होंने जमानत के लिए कोशिश करी, जिस तरह से उन्होंने बात अपनी रखी कोर्ट के आगे, कोर्ट कहीं कन्विंस नहीं था। एक बात। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने इस दिल्ली प्रदेश में जो है वो ज्ञान की ऐसी अलग जगाई कि आज उनके जेल जाने के बाद लोग कहीं रो रहे हैं, कहीं अलाप बिलाप और प्रलाप जो है वो पूरे दिल्ली भर में फैल गया। अरे ये वही हैं जो कोरोना के नाम पर
शराब व्यापारियों को टैक्स का, एक्साइज का छूट देते हैं। आप मुझे बता दीजिए, किसी एक जनरल व्यापारी को इस दिल्ली प्रदेश में आप कहीं सर्वे करा लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, किसी को छूट दिया हो कोरोना के नाम पर? आपने शराब के नाम पर शराब व्यापारियों को छूट दिया। 3,000 करोड़ रुपए की जो मैं बात कह रहा हूं, जो सरकारी खजाने से इन्होंने लुटवा दिया, या एक तरह से कह दीजिए कि उसके ऊपर डाका डाला गया, और वो भी किस तरह से कि एक 4 गैर कानूनी कानून अलग से बना के और गैर कानूनी तरीके से, मैं जो 100% दिल्ली में ठेके चलाए जा रहे थे, वो मनीष सिसोदिया के अपने नाम से चलाए जा रहे थे, वो कानूनन नहीं चल रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? कानून के पैरामीटर पे तोला जाए तो वर्मा जी, आप बार बार कह रहे हैं गैर कानूनी। कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया है सर? बोल रहा था, या मनीष सिसोदिया को आरोपी से आपने सीधे मान लिया है कि वो मुजरिम हो चुके हैं और कोर्ट का उनके खिलाफ फैसला आ गया है? लिकर पॉलिसी में जो आप लॉस की बात कर रहे हैं, आप सर जो लॉस की बात कर रहे हैं, वर्मा साहब जी, बीच में बोलने से कोई चीज जो है बड़ी नहीं हो जाएगी सर। पॉलिटिकल रैली नहीं है ना सर कि आप एक छत्र बोलते जाएंगे और उसके बाद आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सेक्रेटरी ने क्या रिपोर्ट दिया? चीफ सेक्रेटरी ने 3,000 करोड़ का मैंने दिया है क्या रिपोर्ट? जो मेरे से सवाल कर रहे हो, जाओ ना चीफ सेक्रेटरी को यहाँ लेके आओ। अब सर ऑल दीज मैटर्स, महेश वर्मा जी, आपसे ही सवाल किया जाएगा और जो भी बोला जा रहा है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। ना तो आप यहाँ पे जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर है, ना हम है। तो इस बात को जरा थोड़ा आप भी समझिए। नहीं, ये गलत। अंकित जी, बहस होना अच्छी बात है, आप बहस होकर बात करिए, बहस होकर सवाल खड़ा करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भ्रष्टाचारी के समर्थन में आप खड़े हो जाइए। सर भ्रष्टाचारी और आपसे सर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं किसी के लिए भी। शायद ये आपकी राजनीति है, एक दूसरे पे आप लोग जो भी आरोप लगाए, सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। या तो आप उस चीज को जब सवाल करिए तो उस सवाल को सामने चीफ सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भेजा था, और उस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल ने कहीं से नहीं डिनाई किया। ये वही मनीष सिसोदिया है जिनको आज गिरफ्तार किया, ये वही मनीष सिसोदिया है जिनको आज गिरफ्तार लोगों ने कहा है, खुलासा किया है कि मनीष सिसोदिया ने कैसे कैसे पैसे दिए, उसको कन्फ्रंट करने की इनकी ताकत नहीं थी। ये सब अब कोर्ट में प्रूवन किया जाएगा, वेटिंग फॉर दैट। कि जिस चीज को कंसील करके सामने रखा जा रहा है एनडीटीवी के दर्शकों को, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। महेश वर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए काफी रेवलेशंस करे हैं। थैंक यू। हमारे दर्शक आपका धन्यवाद जरूर करेंगे कि आपने इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें बताई है, लेकिन कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं या अक्षय मराठे कह रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार के मामले में महेश जी, ये मेरे और आपके बीच की बहस नहीं है, ये कोर्ट के अंदर अब बहस होनी है। आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी, सीबीआई अपना पक्ष रखेगी। मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत करा है, वो जेल जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं करा है तो वो बाहर आ जाएंगे। आप लोग की राजनीति उसमें चलती रहेगी, हम लोगों को उसमें फायदा होगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय आ गया है, so I would request you to hold on to your horses. We'll take a very quick break at this moment and we'll come back. This entire political fight, Gargi, that is what it happens. I mean, right, absolutely, back and forth. Given blanket clean chits and blanket statements. Right, at the same time, AAP trying to play up the education aspect and achievements of Manish Sisodia. That does not, of course, clear him from the very serious allegations against him. But at the same time, to call him a criminal at this point, it's still something that is to be proven in the court. We'll slip into a short break and return with more. Stay with us.